Acha. In fact, so far we have discussed the effects of poles on the system response and looked at the fact that location of the poles essentially influence the stability of the system. And we convinced ourselves that for BIBO stability, all the poles of the system must lie on the left half as plane. That is, the poles should have negative real part in their magnitude specification. But we haven't seen explicitly the effect of zeros on the system response. So now we will be doing some examples to examine the effect of zeros. So today's topic is in fact effect of तो पोल के context में तो बड़ी डिटेल से बात होती रही है but zeros को हमने explicitly नहीं देखा था. So if you recall, the definition of the transfer function is the ratio of the Laplace of the output to the Laplace of the input with all initial conditions being zero. So we can say that the transfer function is a ratio of the two polynomials in S called NFS and DFS. So अगर मैं TFS की बात करूं, which is the transfer function of some system. So that is, it's a ratio of the polynomials NFS, so divided by DFS, and both are polynomials in S, where NFS is the numerator polynomial, DFS is the denominator polynomial, and the roots of NFS are in fact जी जनाब, रूट्स ऑफ DFS क्या होते हैं? Sir, poles. Good, shabash. So these are the poles and these are zeros of the system. So we have seen that poles are connected to the system stability. Now let's look at zeros. Poles के बारे में हमें बहुत ज़्यादा discussion हुई है और हमें पता है कि ये stability के साथ related है. Let's see what's happening with the zeros. So in order to see the effect of zeros, we are going to solve two examples. And the example is that find the unit step दो सिस्टम है P1 of S and P2 of S, and so what is okay, P1 of S is equal to 1 over S plus 1 and S plus 10, and P2 of S is equal to S plus 2 divided by S plus 1 S plus 10. जी इरफान, दोनों सिस्टम्स में क्या फर्क है बेटा? सर एक की zeros -2 पे, बाकी सब तो पोल्स तो सेम ही है. पोल सेम है. ग्रेट, जबरदस्त. So इस बात का मतलब ये है कि if I am interested in making the pole zero plot of this system, it has a pole at -1 and suppose this is -10, so it has a pole at -10. ठीक. And similarly, if I am interested in making, चलें इसको बाद में देख लेते हैं, पहले इस सिस्टम को हम लेके चलते हैं आगे. Okay, so we had done the pole zero plot. Now let's move forward. स्टेप रिस्पॉन्स की तरफ आते हैं, और अगर मैं स्टेप रिस्पॉन्स इस सिस्टम का देखूं तो RFS should be considered as 1 over S, and I'm interested in YFS, which is nothing but P1 of S into RFS, and that would be 1 over S
s plus 1 s plus 10, and that's equal to a over s plus b over s plus 1 plus c over s plus 10. And if you find out the values, a will be 1 over 10, so it is 1 over 10s. B is minus 1 over 9, so it's something like that, and C is 1 over 90. ओके नंगियाल y of t लिखना है, जल्दी से बता दें। नंगियाल 10 10 e power 10 minus minus 9 minus 1 over 9 1 over 10 minus 1 over 9 e power minus e 1 raised to power minus t t minus plus t 1 over 90 e raised to plus power 1 over minus 90 10t. minus 10. Okay. So the system is bipole as we have seen here, because the poles are on the left half plane, the placed at minus 1 and minus 10 pay. Or now this is your step response, and when t tends to infinity, what happens to the output? It goes to the steady state value, which is 1 over 10. So the output is bounded for all time, so the stability is confirmed from the output as well. आउटपुट फंक्शन के अंदर अगर आप अपनी ये exponential terms देखें, तो exponents of the exponential are in fact the location of the poles, and to be precise the real component of the pole location sigma. देखिए आपका पोल -1 पे और -10 पे पड़े हुए हैं, तो वो जो रियल कंपोनेंट है आपका, वो आपके एक्सपोनेंट्स के अंदर जो है वो आ रहा है. सो वी हैव -1 एंड -10 आर द टू एक्सपोनेंट्स हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं. नाउ लेट्स डू द सेम प्रोसेस फॉर P2 of s. तो चलिए P2 of s को देखते हैं कि वहां पे हमारे पास क्या सिचुएशन है. So this is j omega axis, this is sigma, and we have a pole at -1 and we have a pole at -10, but this time I'm introducing a 0 at -2. ठीक है? And if I'm interested in, so that's the only difference between these two systems, because I wanted to see the effect of zeros. Poles को मैंने नहीं छेड़ा, poles बिल्कुल उसी तरह से रखे हैं, but what I have done, I have introduced a 0 at s is equal to -2. Now let's see what's the step response of this system. So again इसका step response देखते हैं. That is r of s is equal to 1 over s. Again y of s will be equal to P2 of s into r of s, and that is in fact s plus 2 divided by s, s plus 1, s plus 10, and that is equal to a over s plus b over s plus 1 plus c over s plus 10, and finally you are getting some values for a, b and c, and for a you are getting 1 over 5, so 1 over 5s minus 1 over 9 s plus 1, this is same and both the examples, and minus 8 over 90 s plus 10. And if I am interested in knowing y of t, so y of t will be equal to J, any volunteer? 1 over 5 minus 1 over 9 e power minus p minus 8 by 90 e power minus 10. Minus 10t. ठीक है? In this solution as well, when t tends to infinity,
the output value जो है that goes to 1 over 5, so it is bounded as well. System is bifostable because in both the systems the poles are located on the left half plane. So both the systems are stable, location of the poles are the same. What is changed? आपकी observation क्या है? क्या चीज चेंज हुई है सिर्फ एक जीरो रखने से? ओवरऑल आउटपुट में क्या फर्क पड़ा है? पहली ऑब्जर्वेशन आपको क्या नजर आ रही है कि क्या फर्क पड़ा है एक जीरो प्लेस करने से? सर टी इनफिनिटी जब पुट करेंगे तो स्टेडी स्टेट की जो वैल्यू वो चेंज हुई है सर, वो 1/10 स्टेडी स्टेट की वैल्यू, सबसे पहली चीज जो आप देख रहे हैं, स्टेडी स्टेट की वैल्यू यहाँ पे 1/10 थी, यहाँ पे 1/5 है. सो द प्लेसमेंट ऑफ द जीरो हैज चेंज्ड द स्टेडी स्टेट वैल्यू फ्रॉम 1/10 टू 1/5. सो पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि स्टेडी स्टेट वैल्यू चेंज हुई है. अच्छा, अब जरा देखिए कोएफिशिएंट्स ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस टी और e रेज़ टू पावर माइनस 10t, ये भी चेंज हुए हैं. ठीक है, e raised to power minus t और e raised to power minus 10t के कोएफिशिएंट्स इधर भी और इधर भी एटलीस्ट दूसरी टर्म्स जो है वो चेंज हुई. लेकिन जरा अगर हम गौर से देखें तो हो क्या रहा है. अच्छा, इस केस में देखें अगर आप, डोमिनेंट पोल कौन सा है? -1. -1 वाला पोल डोमिनेंट है बिकॉज दैट इज क्लोजर टू द इमेजिनरी एक्सिस, सो इट इज कॉल्ड डोमिनेंट पोल. फर्स्ट इसमें भी डोमिनेंट पोल यही है, इसमें भी डोमिनेंट पोल यही है. एंड इफ वी कंसीडर द फर्स्ट आउटपुट रिस्पांस, व्हिच टर्म इज डोमिनेटिंग? अगर टर्म्स की बात करें तो कौन सी टर्म डोमिनेट कर रही होगी? यहाँ पे डोमिनेंट पोल से रिलेटेड ये वाली टर्म है और यहाँ पे डोमिनेंट पोल से रिलेटेड ये वाली टर्म है. एग्रीड? यस. इनफैक्ट व्हाट्स हैपनिंग, और ये यहाँ पे मैं इसको डोमिनेंट क्यों कह रहा हूँ और इसी की वजह से वो पोल डोमिनेंट कहलाया जा रहा है, बिकॉज ये ज्यादा टाइम ले रही है, ये वाला जो टर्म है इस y of t में, टू डिके एज कंपेयर टू दिस टर्म, because e raised to power minus t is decaying with a time constant of 1/t 1 के साथ, और ये वाली जो है 1/t 1/10 के साथ जो है ये डिके कर रही है. सो इस बात का मतलब है इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू डिके. सो दैट्स व्हाई ये टर्म जो है, ये पोल जो है -1 वाले पोल के साथ एसोसिएटेड है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज अ डोमिनेंट पोल because that would take longer time to decay. So the term which is e raised to power minus t is associated with the dominant pole as it will decay slowly as compared to e raised to power minus 10t. अगर मैं compare करूं e raised to power minus t और e raised to power minus 10t वाली terms को, जरा ये देखने वाली बात है कि हो क्या रहा है actually. So if I am comparing the magnitudes, यानी 1/9 e raised to power minus t को मैं कंपेयर करता हूँ 1/90 e raised to power minus 10t के साथ. सो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो व्हाट्स हैपनिंग, ओके जी, मैं इन मैग्नीट्यूड्स को प्लॉट करने जा रहा हूँ. 1/9 e raised to power minus t किस तरह की चीज है? सपोज इट इज स्टार्टिंग एट 1/9 and then it will start decaying and something like that. और 1/90 e raised to power minus 10t किस तरह की चीज होनी चाहिए? That should be starting at this place 1/90 and of course that would be decaying this. So यहाँ से भी नजर आ रहा है that 1/9 e raised to power minus t is going to dominate for a longer time. t is equal to infinity पे दोनों ही टर्म्स जो हैं आपकी आउटपुट की, जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, दोनों ही जीरो हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली यू विल बी रीचिंग योर स्टेडी स्टेट वैल्यू. बट जस्ट इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो दिस इज हैपनिंग. तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद 1/9 e raised to power minus t
and this term is 1/90 e raised to power minus 10t के साथ. So of course ये dominant pole के साथ associated है. ठीक. So it will take longer effect on y of t as compared to e raised to power minus 10t. Agreed? कोई question, कोई confusion? No, sir. Okay, now look at the residues. तो रेजिड्यूज को अगर हम देखें तो ये चीज हम देख चुके हैं कि 1/9 है और 1/90 है. So not only does e raised to power minus t dominates e raised to power minus 10t, एक्सपोनेंशियल टर्म्स को देखें तो ना सिर्फ वहां पे डोमिनेट कर रहा है बल्कि रेजिड्यूज को भी अगर आप देखें तो e raised to power minus t वाली टर्म का रेजिड्यू जो है वो 1/9 है और जो दूसरी टर्म है e raised to power minus 10t का वो 1/90 है. सो यहाँ पे भी आपके रेजिड्यूज में भी आपका डोमिनेंट पोल जो है उसकी जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं वो उसको डोमिनेट कर रही हैं. सो 1/90 e raised to power minus 10t जो है that dies down more instantly when compared with 1/9 e raised to power minus t. अच्छा, अब दूसरे को देखते हैं. दूसरे जो हमने एग्जांपल की है where we have introduced a zero close to the dominant pole. What's happening there? अगर हम यहाँ चलें तो इसका अगर हम टर्म्स देखें तो इनफैक्ट टर्म्स आर वहाँ पे भी 1/9 वाली टर्म है e raised to power minus t वर्सेस वहाँ पे आपके पास एक टर्म है दैट इज 8/90 e raised to power minus 10t. सबसे पहली चीज तो हमने यही देखी है कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स हैं रेजिड्यूज जो हैं वो भी चेंज हुए हैं बाय प्लेसिंग दी जीरोस. एंड इफ आई प्लेस इट, अगर मैं इसको प्लॉट करूं, अब क्या हो रहा है, वी कैन सी इट फ्रॉम हियर. दिस वाज t, सो दिस इज t. सो कहां से स्टार्ट कर रही है? सपोज 1/9 से ही स्टार्ट किया है इसने and it is going something like that. That's the term 1/9 e raised to power minus t, and the second term is 8/90 e raised to power minus t. So that's starting, suppose from here, this is 8/90 because 1/9 was 10/90 kind of thing. So that's starting from here. Yes, it will decay further, faster as compared to 1/9 e raised to power minus t. But you can observe what happened, that so what is the consequence? The consequence is the dominance. ये जो dominant characteristic था कि 1/9 e raised to power minus t वाली टर्म का, जो कि s is equal to -1 वाले पोल के साथ एसोसिएटेड टर्म्स थी. अब जरा देखिए y of t के अंदर इनका इफेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है. So the dominance of the pole at s is equal to -1 is reduced relatively. Why? Because आपने क्या किया है, आपने एक जीरो प्लेस किया है near to this pole, which is in fact the dominant pole. तो dominant pole की वजह से y of t के अंदर जो भी टर्म्स जिस तरह से अपीयर हो रही थी, उनकी डोमिनेंस जो है इस पोल की या इसका जो इफेक्ट है, that is being reduced because of this zero being placed in the vicinity of this thing. So that's the first thing we are observing, कि आपका the consequence of introducing a zero at s is equal to -2 is because that is closer to the -1, the dominance of the pole at s is equal to -1 is reduced. So what happens if you start moving? So अगर आप ये करना शुरू करें कि आप अपना जीरो को इस तरफ मूव करना शुरू कर दें पोल की तरफ, तो क्या होगा ईशा? सर जैसे वो करीब आएगा पोल के, तो अगर वो पोल के ऊपर आ गया तो वो पोल को कैंसिल कर देगा. इस तरह जैसे उसके करीब आता जाएगा तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करता जाएगा. जबरदस्त. क्या नाम है आपका? नंग्याल. नंग्याल. वेरी गुड नंग्याल. सो जैसे जैसे हम अपने पोल को, अपने जीरो को पोल की तरफ मूव करते हैं और उसके करीब लाते जाएंगे, तो डोमिनेंस जो है इस पोल की, जो कि -1 पे प्लेस्ड है, इसकी डोमिनेंस जो है वो रिड्यूस होती जाएगी. एंड अ टाइम विल कम कि जब आपका जीरो जो है वो पोल के ऊपर आ जाएगा और उस वक्त
क्या सिचुएशन होगी? इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा पोल्स का। ठीक है, so placing a zero is in fact going to affect the dynamic response of the system. ठीक होगी बात? So it doesn't have any direct impact on the stability because stability depends on the location of poles, but zeros affect the residues of the partial fraction expansions. We have seen it. So residues of the partial fraction expansion का क्या है? These are the residues of the partial fraction expansion. So by placing zeros, in fact, you are changing or affecting the residues of the partial fraction expansion, and in fact, that would be propagated in your time response as well. Y of t के अंदर यही residues reflect हो रहे हैं. But actually, physical terms में अगर हम देखें तो physical terms में the dominance of the pole, जो जहां भी आप zero आपने place किया है, तो dominance of the poles जो है वो affect हो रहा है. So in physical terms, the zeros will affect the coefficients of the response function, which can be seen in y1 of t and y2 of t. If I call it y1 of t, this is y2 of t. And if you have a zero closer to the dominant pole, the dominance of that pole is relatively reduced. ठीक हो गई बात? So as a result of that, as we were saying कि zero चलता जाए और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जीरो जो है वो बिल्कुल पोल के ऊपर प्लेस हो जाएगा. So at that time what will happen कि आपका जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, इनफैक्ट अगर मैं इसी को देखूं और ये जीरो मूव करते हुए जीरो अगर इस लोकेशन पे वापस इस लोकेशन पे आ गया है, तो व्हाट विल हैपन कि अब आपका P2 ऑफ S जो है वो क्या हो जाएगा? S प्लस टू सॉरी S प्लस वन हो जाएगा. S plus 1 divided by S plus 1, S plus 10, that would be cancelled, and as a result of that you will be getting 1 over S plus 10 P2 of S. The net effect जो है इसका वो हो जाएगा. So what was a second order system to begin with, that will start acting like a first order system. So that's pole zero cancellation. Okay, agreed. So what is the net effect of placing a zero? Irfan. सर फिर कोएफिशिएंट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन चेंज हो जाता है. और physical terms में what we are doing, we are reducing the dominance relative पोल का इफेक्ट चेंज हो जाता है. dominance that is being जिस जैसे जैसे ये दूर होता चला जाएगा पोल से, अगर दूर होता चला जाएगा इस पोल से, जो डोमिनेंट पोल है, दिस इज आवर डोमिनेंट पोल, जैसे हम दूर होते चले जाएंगे तो वो जो डोमिनेंस है उसकी बढ़ती चली जाएगी, और अगर नजदीक आते चले जाएंगे इस जीरो से तो उसकी डोमिनेंस जो है वो कम होती चली जाएगी टिल द टाइम वी रीच at -1 where the pole is located. At that time pole zero cancellation हो जाएगी and that's it. उसके बाद आपके पास वो जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम से स्टार्ट किया था वो फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा. Now let's do, in light of these two examples, let's do the third example, which is of course related with this. So P3 of S is equal to S minus 2 divided by S plus 1 and S plus 10. So what's the difference? Again the poles are -1 and -10 and zeros at +2. It is +2. So it is placed now on the right half complex plane. So अगर मैं pole zero plot की तरफ जाऊं, so इस केस में मेरे पास -1 पे पोल है, उसी तरह से -10 पे पोल है, इसी तरह से जैसे मेरे पिछले दो सिस्टम्स का था. But this time what's happening that I'm placing a zero at 2. So if we calculate the step response, so again step response के लिए RFS
R of is equal to 1 over S, Y of S is equal to P3 of S into R of S, and so finally you are getting X S minus 2 over S, S plus 1, S plus 10, and that's equal to A over S plus B over S plus 1 plus C over S plus 10, and Y of S जो है that is minus 2 over 10S plus 3 over 9 S plus 1, and minus 12 over 90 S plus 10. Okay, and if we are interested in knowing Y of t, that's very simple. Minus 2 over 10 plus 3 over 9 e raised to power minus t minus 12 over 90 e raised to power minus t. चेक करें किसी का माइक ऑन हो गया, प्लीज उसको ऑफ कर दें. So again, placing of the zeros is changing the residues. वो हम बात पहले कर चुके हैं, and in fact we are watching it कि first example और second example का भी हमने residues का difference देखा था, and now again we are observing that difference as well. ठीक है? Now 0 is at 2, so what are we expecting? So सबसे पहली चीज जो हम expect कर रहे हैं that is steady state value जो है वो देखिए वो चेंज हो गई है, and this time the steady state value is minus 1 over 5 या minus 1 over 2. so अगर मैं steady state behavior को देखूं it is something like that, यानी it is suppose minus 2 over 10. ठीक, so that's my steady state value. ये steady state behavior है, and again the residues of the exponential terms are affected by this change. 0 को different location, पहले वो minus 2 पे रखा हुआ था, this time it is on 2, so as a result of that the residues have been changed. Now the important thing is जरा in terms को देखिए, पिछली दफा ये टर्म थी 1 over 9, अब ये 3 over 9 है. पिछली दफा वो टर्म थी 8 over 90, अब वो 12 over 90 है. So what is your observation? क्या हो रहा है? The relative dominance of this pole is increased because this time इनके दरमियान अब जो distance है that is actually 3, और पिछली दफा जो ये distance था वो distance था 1. So जैसे जैसे distance बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो right hand side पे हो या left hand side पे हो, आपके dominance जो है इस पोल की अब वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गई, because the 0 जो cancel out कर रहा था इसके dominance को वो उससे दूर जाता जा रहा है. Now the important thing जो है वो ये है कि इसका response किस तरह से behave करेगा. Y of 0 की value क्या है? Any idea? नंगियाल, y of 0 अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ क्या होगी? 2/10 minus 2/10. यार y of 0 और से आंखें खोल लो. एक मिनट सर कैलकुलेट करो सर. हाँ जी, फिर e raised to power 0 1 हो जाएगा, तो इस तरह से फिर आ जाएगा. बेटा इन तमाम सिस्टम्स में ये पिछले 6 हफ्ते से जो भी आप कर रहे हैं, y of 0 जो है that should start from 0. इसको आप करके देख लीजिए. minus 2 over 10 plus 3 over 9 minus 12 over 90. This is equal to 0. So the system output, both the systems, please calculate the responses. इसको MATLAB में आप कैलकुलेट कीजिए y1 of t को भी और y2 of t को भी. So you will be watching कि ये सिस्टम जो है ये 0 y1 of 0 जो है वो 0 पे ही स्टार्ट कर रहा है.
So 1 over 10 minus 1 over 9 plus 1 over 90 is equal to 0. y of 0 की अगर बात करें, इसकी अगर y2 of 0 की बात करें तो it is 1 over 5 minus 1 over 9 minus 8 over 90, that is equal to 0. So that is a check in fact कि आपने अपनी इनिशियल कंडीशन 0 के साथ आपने ट्रांसफर फंक्शन क्योंकि बनाया था, तो एट टाइम t is equal to 0 द रिस्पांस जो है वो 0 होना चाहिए. बट ऑफ कोर्स उसके बाद जो है वो स्टेडी स्टेट को अप्रोच करता है पासिंग आफ्टर द ट्रांजिएंट्स. So the same thing will happen here, but by placing a 0 on the right hand side, यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंज है, और वो चेंज ये है कि आप 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद ये स्टेडी स्टेट की तरफ जो है इस तरह से. प्रीवियस आउटपुट्स जो हैं अगर आप उनको प्लॉट करके देखेंगे, द आउटपुट विल स्टार्ट एट 0 and will monotonically increase to the final value. यानी अगर आप इन दोनों केसेस में जाते हैं इन आउटपुट्स के लिए, सपोज मैं यहाँ पे अगर इसको रफली बनाने की कोशिश करता हूँ, इसकी आउटपुट को और इसकी आउटपुट को, सो इम्पॉर्टेंट चीज ये होगी कि ये 0 से स्टार्ट करेगा. सपोज इसकी स्टेडी स्टेट है 1 over 10, तो ये 0 पे स्टार्ट करेगा और ये मोनोटोनिकली बिहेव कर रहा है. सिमिलरली इसका जो स्टेडी स्टेट है दैट इज 1/5, 0 से स्टार्ट करेगा और विद सम स्लोप ये मोनोटोनिकली अप्रोच करेगा. ठीक है, बट हियर व्हाट्स हैपनिंग, द आउटपुट स्टार्ट्स एट 0. यहां पे स्टार्ट किया इसने एट t is equal to 0 पे, and it will go in the positive direction, then it will change sign, and then it will come to the final value of minus 2 over 10. So the conclusion is that if we have a 0 in the right half plane, our step response will have this type of characteristic where response will start off in one direction and change its sign, reversing the direction, and then settle down to the final value. So इसका इफेक्ट अगर आपने देखना हो कि अगर मुझे इस तरह का सिस्टम मेरे पास फिजिकली हो, तो सपोज अगर मेरे पास सीलिंग फैन है एंड इट हैज गॉट पोल्स इन द लेफ्ट हाफ प्लेन, सो द सिस्टम इज स्टेबल. लेकिन अगर एक 0 जो है वो राइट हाफ प्लेन में है, तो जब आप स्विच ऑन करेंगे फैन को तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आफ्टर सम टाइम इट मे स्टॉप एंड देन स्टार्ट मूविंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो just placing a 0 in the right half S plane, that kind of physical behavior is coming from the actual system, which is of course not required. So zeros in the right half plane are called the non-minimum phase zeros, and we will talk about these when we will be talking about the frequency response. And non-minimum phase systems has its zeros in the right half plane. You have studied non-minimum phase and minimum phase and mixed phase in your DSP course. Have you? कोई आइडिया है? सर नॉन मिनिमम फेज हमने नहीं पढ़ा हुआ है सर, और मिक्स फेज भी नहीं पढ़ा हुआ. मिनिमम फेज पढ़ा है? यस सर, मिनिमम फेज पढ़ा. What was that? वो क्या था? सर हम जी प्लेन में यूनिट सर्कल के अंदर पोल्स और जीरोस रखते थे. जबरदस्त, ग्रेट, जबरदस्त. सो मिनिमम फेज में जी प्लेन में आप कह रहे थे कि आपके पोल्स जो एंड जीरोस जो हैं वो मिनिमम फेज में पोल्स एंड जीरोस यूनिट सर्कल के अंदर होते हैं. तो यूनिट सर्कल का अंदर जो है, आपने मेरा ख्याल है कि ये कंपैरिजन भी किया होगा, तो यूनिट सर्कल का अंदर स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे कौन सी जगह है एस प्लेन में? जी प्लेन में तो वो यूनिट सर्कल के अंदर था, तो यहाँ पे वो कौन सी जगह होनी चाहिए? लेफ्ट हाफ प्लेन. वेरी गुड. सो इस बात का मतलब है मिनिमम फेज सिस्टम्स वो होते हैं जिनके जीरोस एंड पोल्स ऑन द लेफ्ट हाफ साइड पे हैं. सो दिस इज माय सिस्टम व्हिच इज अ मिनिमम फेज सिस्टम. सो दिस वन इज अ मिनिमम फेज सिस्टम बिकॉज ऑल द पोल्स एंड जीरोस आर ऑन द लेफ्ट हाफ प्लेन. इसमें कोई जीरो है ही नहीं. सो इसमें अगर हम देखें तो ये आपका नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है क्योंकि जीरो जो है वो राइट हाफ प्लेन पे पड़ा हुआ है. वी विल स्टडी इन डिटेल, बट द इंपॉर्टेंस ऑफ टुडेज लेक्चर वाज कि हम जीरोस की वजह से जो इफेक्ट आता है हम उसको देख सकें. एंड द मेजर जो कंक्लूजन है वो ये है कि जब आप जीरो प्लेस करते हैं
on the left half plane near your dominant pole. तो as a in the vicinity of j omega axis, तो क्या होता है कि dominance of that pole is being relatively being reduced. और जैसे जैसे आप उसे करीब लेते आते हैं अपने dominant pole से, तो वो जो इफेक्ट है उसकी डोमिनेंस का, जो लिंगरिंग इफेक्ट है उसकी, जो एक्सपोनेंशियल टर्म के डिके होने का, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जाता है, वो डोमिनेंस जो है वो रिड्यूस होती चली जाती है टिल द टाइम व्हेन योर जीरो coincides with this pole, तो वो पोल जीरो कैंसिलेशन हो जाती है. और अगर आपने स्टार्ट किया था एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम से, तो यू विल बी एंडिंग अप ऑन अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. तो सिस्टम विल बी बिहेविंग लाइक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. एंड देन वी डिड दिस एग्जांपल, द थर्ड वन, जिसमें हमने जीरो को प्लेस कर दिया ऑन द राइट हाफ प्लेन. ऑफ कोर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड, but the distance between the dominant pole and the zero location has been increased. So we see कि यहाँ पे जो आपको रेजिड्यूज नजर आ रहे हैं आपके पार्शियल फ्रैक्शन के, या आपके टाइम उसके अंदर, टाइम रिस्पांस के अंदर, स्टेप रिस्पांस के अंदर, तो वहाँ पे जो डोमिनेंट जो रेजिड्यूज हैं वो आपको बता रहे हैं कि एज कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जांपल, यानी जिसमें आपका जीरो जो है वो लेफ्ट हाफ प्लेन में रखा हुआ था, यहाँ पे आपका जो डोमिनेंस ऑफ द पोल है जो -1 पे है, उसकी डोमिनेंस रिलेटिवली improve हुई है as compared to the previous example. And the most important thing is कि आपकी y of t जो है वो 0 से start हुआ, एक डायरेक्शन में चला, उसने साइन चेंज किया, और फिर वो उसके बाद steady state पे गया. And as a result of that, we have concluded that the zeros on the right hand side are somehow gives you the dynamic response which is not required. Any questions, beta? Yes, I will. जी बेटा, बेटा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे टाइम की बात बता रहे हैं.